10th क्लास लिंक पढ़ा। गुड मॉर्निंग कौन कहला? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग को कहला? इसलिए बंद करो तो कॉल कर बंद कर दो किसी को। इंडिकेट पे डाल। इंडिकेट पे हां। Good evening, student. Hi. And within your look. Very good evening. Okay, students. So tomorrow new chapter is reproduction. Biology no next chapter. Okay, reproduction. आज reproduction tomorrow किछिटा पढ़ाई देबी. Good evening, very good evening to all. Okay, very good evening. So let's start the chapter reproduction. Reproduction. Okay. So toma chapter na thibo how do organism reproduce? How do organism reproduce? Okay. So chapter na to eta, but main word is reproduce. Reproduce. Okay. So reproduce means kona? Reproduction means kona? सेम जिनस. ओके. सो रिप्रोडक्शन आज आम डेफिनेशन सहित पूरा क्लियरली पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शंस. ओके. सो केते जण आसिले नोट समस्ते बनै दियो. मु आज टिके रफली नोट्स दोची. ओके स्टूडेंट्स. सो रिप्रोडक्शन माने कोन? फर्स्ट सपोज आमे निजर गोटे एग्जांपल नबा. ओके. सपोज यू. तो you means someone. Okay. Say comes from their parents. Okay. Father and mother vastivo. Then semanakar father and mother comes from their respective parents. Okay. Tankar respective parents vastivi. Means kona? Their parents reproduce the child. Okay. Means child आमे जो form होचे means आमे reproduce होचे. Okay. So reproduction रो main definition कौन? Reproduction रो main definition होची a living organism produce a new living organisms. Okay. Reproduction रो meaning होची a living organism reproduce a new living organisms. That is called reproductions. And here the definition is reproduction is a process in which a living organisms produce new living organisms of its own kind. Of its own kind. Very important. Okay. एतिक पर्यंत आमे लिखिले गलत हे जिवो. Living organisms तो किए भी तो living organisms. But own kind कौन स्टूडेंट एठी? Tiger. Say baby tiger. ही प्रोड्यूस करि परिबो. ह्यूमन बीइंग को ही प्रोड्यूस करि परिबो. सेम ऑर्गेनिजम्स ही सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करि परिबे. इज इट क्लियर और नॉट?
So definition में तमरो जो एक लिखा है of its own kinds, it's very important student. Okay, elephant produce its baby elephant. Okay, human being produce a baby human being. Okay, so the definition is reproduction is a process in which living organisms reproduce a new living organisms of its own kind, Okay, reproduction clear? Then reproduction student ये भी गोटे लाइफ प्रोसेस मु तुमको लाइफ प्रोसेस रे पढ़ी कौन कौन न्यूट्रिशन हमें पढ़ी then digestion, okay, and also then हमें पढ़ी circulation, circulatory systems, excretions. तो देखो these four life processes very important for a living organisms or survival of an organisms. गोटे organism survive करिया को हेले we need these processes, these life processes. Without life processes we never exist in this earth. Okay, the earth रे हमें exist होची due to the performance of these life processes. I mean life process करूची बोली हमें exist. Okay, nutrition, food intake करिवानी तो बंचिबा कि नहीं. Okay, digestion हबनी तो बंची परिबे कि no. Then circulatory system, blood circulation हबनी पड़िले. Then also we will die. Okay, excrete. जदि हम excrete भी करिवानी, then एटा भी हमको affect करिवो. Means all these life processes are plays vital role for a survival of an organisms. Okay, just like that, a reproduction also a life process. Okay, also a life process. But तब मैंने कहा मैडम reproduction हमें reproduce जदि किछिटा अछंदी जो माने मैरिज करू नांदी मींस कोन से माने reproduce करिबेनी तो reproduce करू नांदी तो ताको किछि इफेक्ट होछि कि सर्वाइव करिबारे नो किछि इफेक्ट नै से माने सर्वाइव करिबारे विदाउट रिप्रोडक्शंस. ओके, सो रिप्रोडक्शन टा हमर इंपोर्टेंट रोल नै सर्वाइव करिया पई बट एटा गोटे कोन प्रोसेस जो प्रोसेस रे हमें न्यू जेनरेशन क्रिएट करे परिबा. ठीक अछि, तो रिप्रोडक्शन भी वेरी इंपोर्टेंट. रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट बट इंडिविजुअली इट्स ओके. इंडिविजुअल जदि जने डिसाइड करला कि ना मो रिप्रोड्यूस करिबिनी, यस इट्स ओके. बट आमी जदि कलेक्टिवली जदि इंडिया की ओल्ड जति भी पॉपुलेशन अछन समस्त कहबे कि ना आमी रिप्रोडक्शन करिबानी. सो रिप्रोडक्शन जदि आमे केही भी करिबानी तो कोन हो ए जनरेशन तो टाइम टू टाइम डेथ हे जिवो समस्त सरी गला. देन नेक्स्ट जनरेशन अर्थ एग्जिस्ट हे पारिबे कि एग्जिस्ट हे पारिबेनी. सो रिप्रोडक्शन भी किछिटा वाइटल रोल प्ले करूची जोथि पाई कि लाइफ एग्जिस्ट हे पारिबो. ठीक अछि, सो इंडिविजुअली इट्स ओके जदि जे चाहिला नाही रिप्रोड्यूस करबानी तो इट्स ओके बट कलेक्टिवली इट्स नॉट ओके for life. Okay, so second bit रे गोटे पॉइंट्स मु लिखी छी reproduction is vital for the survival of life or for the existence of the life on earth. earth रे life जदि exist होबार अछि और exist करिवार अछि then reproduction is vital role. Okay, collectively but individually it's not a vital role. Okay, clear students? So reproduction हमें पढ़िबा. then types of reproduction it is of two types. One is asexual reproduction and another one is sexual reproductions. Okay, asexual a difference of student asexual and sexual reproductions. asexual reproduction रे we produce हुए baby new form हुए and sexual रे भी new baby form हुए. Okay, but name कोन पे ये उड़े आइछि तो देखो asexual and sexual with a difference कोन ना asexual only single parent will be responsible for asexual reproductions. Okay, but sexual reproduction there 1 minute. Asexual reproduction perform a single parent but sexual reproduction perform
तो तुम्हें जब form each of produced from your mother and father, yes or no? So mother and father, there is two parent, then you can able to produce. Okay, you means mother and father. For example, elephant, animal रे भी हमें जब example लगा, suppose elephant means elephant produced कौन from mother elephant and father elephant. Is it clear or not? So there is two type of parents. Okay, so sexual reproduction require two parents, but asexual reproduction require only single parent. Only single parent. So single parent कौन हमें अब को भी पढ़िबा types of asexual reproductions, बहुत सारा तरह types अच्छी 7-8 types अच्छी. Okay students, so देखो asexual reproductions occurs in simple organisms like microorganisms. तो हमें 8th class में पढ़ी जो microorganisms, that is simple organisms. Okay, तो simple organisms ही mostly asexual reproductions करती. Okay, for example तमें amoeba, plasmodium, okay, euglena. So बहुत सारे example अच्छी हमें पढ़ी बैठ ठीक अच्छी. So these are the examples of microorganisms, and plants also perform asexual reproductions. Okay, asexual reproductions plants भी perform करूँगी. So asexual and sexual में the difference clear student? Sexual reproduction में तमें बहुत सारे examples लेके पाएगा. I write here humans, dog, elephants, birds, fishes, plants, and some of the plants perform asexual reproductions, and some of the plants perform sexual reproductions. Okay, clear students? Clear? Write it down. If any doubt, then please tell me. Okay, done? Yes. कौन पूछेला न्यूज़ एक्सेप्शनल केसेस मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे सुबश्री होता मुझे क्लियर करेबी हैला जोठी कि हमर एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे ह्यूमन बीइंग स्पेशली ओके डॉग्स डॉग मानकर 6टा पॉसिबल 6टा न्यू बेबी फॉर्म हे परिबे सेमिति ह्यूमन बीइंग रो 2टा पॉसिबल बट जनरली कौन हो वन बेबी ही फॉर्म हो बट एक्चुअली हमरो चांसेस टू बट मोर देन 6 7 8 10 11 भी हो जोटा आम न्यूज रे भी देखुचे ठीक अच्छे से जिनस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ेला बेले हम क्लियर करेबी सेटा काहे हुए ओके सो एरेज कर स्टूडेंट Okay, next heading dear students, asexual reproductions, types of asexual reproductions, types of asexual reproduction. Okay, types of asexual reproduction रे बहुत सारे types अच्छे हमें one by one आज ही पढ़ेगा. Okay, तो first one is binary fission. Binary fission. Second one is multiple fission. Third one is fragmentation. Okay, मु सब जगह क्लियरली बुझे देबी को organism small organism performs binary fissions and those are performs multiple fissions fragmentations these are the process. Okay, these are the process and one by one हमें clearly पढ़िबा. First write down, then budding तो तुमने ठीक से जानजो what is budding. 5 number is spore formation. Write down. Then 6 one is regeneration. Okay, then 7 one is vegetative propagation. Vegetative propagation.
Okay, student. So these are the types of asexual reproduction. So one is binary fissions, multiple fissions, fragmentations. Budding means some of the microorganisms performs binary fissions. Okay, and some of the microorganism performs multiple fissions. And एगुड़ा से गुड़ा कैटेगराइज कराइछि को ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के को टाइप रो परफॉर्मेंस करते ठीक अछि reproduce time. So these 7 are very important. Okay, so first heading the student binary fission. Binary fission तुम्हें ठीक से जानी छो binary fission ये परफॉर्म करूची हमें बेस्ट एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट्स एमोइबा. Okay, so amoeba हमें clearly पढ़िबा आगुनो. Bi means what student? Binary. Binary means what student? 2. Okay, then fission means what student? Divide. केमिस्ट्री भल से पढ़ती हो फ्यूजन फ्यूजन. ओके, फ्यूजन मींस एकाठी होगा, फिजन मींस ब्रेक डाउन होगा. ठीक अछि. सो बाइनरी फिजन्स मींस टू डिवाइड. ओके, तो फर्स्ट हम गोटे एग्जांपल्स नबा एमोइबा. एमोइबा तर सेपलेस ऑर्गेनिज्म. ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल मींस ए सिंगल सेल. ओके, तो एटी कोन होची दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर द साइटोप्लाज्म्स. ओके, तो ये फर्स्ट डिवाइड केमती हो स्टूडेंट्स. फर्स्ट न्यूक्लियस विल बी डिवाइड ओके इनटू टू न्यूक्लियस. फर्स्ट न्यूक्लियस दीटा न्यूक्लियस रे कन्वर्ट हो. आफ्टर ऑल न्यूक्लियस डिवाइड होला परे देन साइटोप्लाज्म्स इक्वली डिवाइड हेबे. ठीक अछि, साइटोप्लाज्म्स इक्वली डिवाइड हेबे. देन कंप्लीटली कोन हो ना टू सेल्स परफॉर्म्स. ओके, टू सेल्स आर फॉर्म्ड. सो तो प्रोसेस टा बुझा पड़ स्टूडेंट्स. दीज आर नोन एज डॉटर एमोइबा. डॉटर एमोइबा. Okay, draw the diagram. First unicellular organisms, it is a microorganism. Amoeba first के डिवाइड होची न्यूक्लियस डिवाइड्स होची. एटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू रे फर्स्ट आसीबो जदि बाइनरी फिजन से न्यूक्लियस डिवाइड होची कि फर्स्ट साइटोप्लाज्म डिवाइड होची. सो आंसर इज न्यूक्लियस. First nucleus divided into two nucleus, then cytoplasm equally divided, then daughter amoeba are formed. Okay, two daughter amoeba formed. तो दीटा ही form है. That means binary fissions. One amoeba divided into two amoeba. One amoeba divided into two amoeba. Okay, so केतेटा reproduce है? दीटा reproduce है. That's why the name is binary fission. Okay, so it तमे गोटे last 2 points लिखि परिबो. Nucleus divide first and then cytoplasm. Okay, then cytoplasm. Any doubt student? You already done 9th रे भी पढ़िछो, 8th रे भी पढ़िछो. Okay, I hope समस्त को clear थिबो. Yes, sorry for late join. Okay, okay, it's okay. Ma'am, why it is called daughter amoeba? Daughter amoeba कुहा होची. Okay, काहे daughter amoeba कुहा होची, काहे son amoeba कुहा लानी. एटा भी गोटे रीजन होची स्टूडेंट्स. अच्छा, ये भी जेतले गोटे वेल ग्रोथ हे जीवो ना. देखो ये बेबी amoeba, then he is going to growth हे जीवो और गोटे fully growth हबो. At that time it is ready for divide. Okay, then it is ready for divide means ये ready हे जेतिबो कि again ये divide हो पाए. एमती तो नुह कि 5 वर्ष जो छुआ जन्म करिवो एमती तो हुएनी ना ह्यूमन बीइंग रे. सेमिति सब ऑर्गेनिज्म रे भी ताके जन्म हो तो ताके डिवाइड ही परिबेनी ना. दे नीड सम टाइम ओके टू ग्रो फर्स्ट. तो ये फर्स्ट ग्रो हबो, देन आर गोटे परमानेंट शेप आसीबो, साइज आसीबो. देन परमानेंट शेप एंड साइज आसला परे it is ready for cell divide. Then से cell divide हबो. So cell divide को माने करछन जनरली डॉटर माने ही गर्ल्स वुमेन. ओके, सेति पय सेमानकर ना डॉटर दिया गला सॉन दिया गलानी. ठीक अछि, डॉटर एमोबा एथि पय दिया गला कि माने फर्दर डिवाइड हे परिबे. ठीक अछि. और क्या लिखा है रे साई कृष्णा? तू भी मुझे तू बोला. तू भी डॉक्टर है ना.
सो बोल रहा है ओके देन तुम्हें बाइनरी फिजन रो आउ किछिटा एग्जांपल देबी आ डेफिनेशन भी तुम ठीक लिखि दियो स्टूडेंट बाइनरी फिजन टा प्राय पचारे ठीक अछि सो मोइटा इरेज करली ओके हमें गोटे गोटे पढ़िबा सो मोइटा इरेज कर दोछि सो बाइनरी फिजन रो टिके गोटे दिटा पॉइंट्स लिखो पॉइंट नंबर 1 बाइनरी फिजन Binary fusion is the process in which a unicellular organism divides into two organisms. Okay. Then bit number 2 is only for unicellular organisms. Binary fusions केवल possible है पर वो only unicellular organisms है. मन रखना student. Okay, only possible for unicellular organisms. Okay, binary fusion टा clear student? Clear? किछिटा examples को लिखुची student amoeba लिखि दियो very important MCQ रे गोटे पचारे amoeba leishmania spelling very important leishmania then paramecium okay then some bacteria also and protozoa okay some of the important organisms those perform binary fusions okay for asexual reproductions so examples are amoeba leishmania रो डायग्राम भी मु पढाई देबे आसीबो आउरे फ्रैगमेंटेशन रे नेक्स्ट पारामेशियम तो तुमे एतरे भी देखिचो जानिचो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स ओके क्लियर स्टूडेंट्स देन हेडिंग दियो तमरो नेक्स्ट इज अच्छा लेishmania रो आ amoeba रे डिफरेंस टिके बुझे देबे एथरे बाइनरी फ्यूजन रहबा डायग्राम लिखे देखो स्टूडेंट amoeba generally shapeless organisms से जेमिति भी शेप नहीं की रह परिबा यूनिसेलुलर बट लेishmania टा ठीक है ए भଳି थाए स्टूडेंट ए भଳି थाए ओके देन इट इज सम टेल ओके सो देखो दिस इज लेishmania एंड दिस इज बाइनरी दिस इज amoeba तो amoeba रे जो बाइनरी फ्यूजन्स हुए केमिति भी डिवाइड करिबे एमति डिवाइड करिवो ओके ये क्रॉस करके भी डिवाइड करिवो एमिति भी डिवाइड करिवो से जो भी लाइन रे डिवाइड है इट परफॉर्म्स इट प्रोड्यूस टू डॉटर amoeba बट इन केस ऑफ लेishmania जदि हम एमिति डिवाइड हो तो इक्वली ये ग्रोथ कोइ पाइबो कि ये फॉर्म है काहे कि इट लेक्स न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियस इट लेक कर दबो जदि ए भले डिवाइड हो जदि ए भले डिवाइड हो तबे भी न्यूक्लियस लेक कर दबो जदि ए भले डिवाइड हो टेल रे तार प्रॉब्लम हो राइट टेल रो डीएनए की जो भी अछि तार क्रोमोसोम्स आसीबनी तो ए भले प्रॉब्लम हो तो एथे कोन लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होबे ओके लेishmania रे जो सेल डिवीजन हो बाइनरी फ्यूजन जो हुए ये लॉन्गिट्यूडिनली हो स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडिनल माने कोन suppose the shape of leishmania is this then the division to केमिति होबो देखो nucleus okay division a one type of student okay it is a one part and it is a another part okay leishmania रे a one longitudinal divide हुए clear student clear next heading दियो तमरो multiple fission अच्छा leishmania गोटे disease भी तुम मन रखो काला आजार तो मैं नाइन्थ में पढ़ी थी गोटे चार्ट टा पढ़िया कही से गोटे काला आजार बोली डिजीज थिला सेटा हुए ड्यू टू द काला आजार हुए कोथि पई स्टूडेंट लेishmania लगी इट कॉजेस काला आजार डिजीज एटा इंपोर्टेंट पॉइंट ओके नेक्स्ट एस्टान जे अछि तो माने डीपली पढ़ले जानि परबो next is multiple fission okay it is clear or not complete ma'am sometimes when mother gave birth to baby after some hours
एटा पर्सनल रीजन थाए से सब डॉक्टर पाठ पढ़ले एटा मुझे पढ़ेबी बहुत सारा रीजन थाए हम केतेटा रीजन दब कार न्यूट्रिशन ठीक नथिबो किए पेटरू ही मदर जो एक्सक्रीटा खाई देथिबो तबे भी मरी जीवो बेबी ओके बहुत सारा रीजन्स अछि एटा एबे हम पढ़िबा किछि आवश्यक नाही ओके नेक्स्ट कम्स टू मल्टीपल फिजन कंप्लीट ना स्टूडेंट डायग्राम जब बनाऊ था बुझा पड़ो पर ओके नेक्स्ट हेडिंग इज मल्टीपल फिजन आज तीनटा ही पढ़िबा तापर बाकी मु आउ चारिटा काली पढ़ेबी मल्टीपल फिजन ओके मल्टीपल फिजन means what student multiples means what more than one and fission you know divide so multiple fission जो भी organism perform करिवो से ना गोटे organisms can be produce more than one organisms of its own kind means मल्टीपल फिजन रे जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करिवो से ऑर्गेनिजम्स ना मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स एट ए टाइम रिप्रोड्यूस करि परिवो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन्स सो एमोइबा परफॉर्म्स बोथ बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स ए जिंस माइंड ठीक माने पूरा मन रखो कि एमोइबा मल्टीपल फिजन भी करि पारे आ बाइनरी फिजन भी करि पारे बाइनरी फिजन कोन नॉर्मल डे टू डे लाइफ रे बाइनरी फिजन्स करे बट मल्टीपल फिजन टा जनरली तमरो समर सीजन रे मल्टीपल फिजन करे एमोइबा ओके स्टूडेंट सो मल्टीपल फिजन को टाइम रे करे समर सीजन रे एक नॉर्मली कोन ना एमोइबा पॉन्ड रे ही वाटर रे ही रुहे ठीक अछि समर सीजन रे सब वाटर पॉन्ड रो सुखी गला तो सेही तो बहुत सारा एमोइबा थेबी तो से माने कोन करंती सपोज मैं एमोइबा एग्जांपल लेबी एमोइबा कोन करिवो दिस इज द न्यूक्लियस एमोइबा कोन करिवो तो चारि पटे गोटे बाउंड्री क्रिएट कर दबो ठीक अछि गोटे कवरिंग क्रिएट कर दबो गोटे हार्ड कवरिंग क्रिएट कर दबो दैट इज कॉल्ड सिस्ट ओके सिस्ट से सिस्ट क्रिएट कर दबो ठीक अछि देन दिस इज द न्यूक्लियस तो बहुत दिन हो गला ताको वाटर रो किछि वाटर एटमॉस्फेयर से आसिलानी तो समर सीजन रे कोन हुए ना ए न्यूक्लियस टा कंटीन्यूअसली ब्रेक डाउन हुए कंटीन्यूअसली ब्रेक डाउन एक्टिव है जीवा ना तो कंटीन्यूअसली ब्रेक डाउन हो तो ये कोन हला दीटा न्यूक्लियस अगेन डिवाइडेड इनटू टू दिस इज आल्सो टू ओके एमिति गोटे पर गोटे सब जगह कोन हुए स्टूडेंट वन बाय वन रिप्रोड्यूस हुए तो एट ए टाइम मोर देन एमोइबा जदि हमें पैरामीशियम रे एग्जांपल लबा पैरामीशियम आल्सो परफॉर्म्स मल्टीपल फिजन्स ओके एग्जांपल में लिखिबी को गुडा को मल्टीपल फिजन करंती पैरामीशियम सपोज दिस इज पैरामीशियम तो पैरामीशियम भी मल्टीपल फिजन करे तो बहुत सारा पैरामीशियम भी तरह गला जिते दे नीड सुइटेबल एटमॉस्फेयर्स तो एमान को सुइटेबल एटमॉस्फेयर मिला कि वाटर रो कांटेक्ट रे आसीला से टाइम रे कोन होय ना सिस्ट का ऑटोमेटिक बर्स्ट हो स्टूडेंट ऑटोमेटिक बर्स्ट हो ठीक अछि तो ऑटोमेटिक बर्स्ट रे कोन हो ना सब पैरामीशियम और एमोइबा धीरे धीरे लीक हो कोडी के वाटर ठीक अछि when they get suitable atmosphere or suitable climate then the cyst or covering of amoeba or paramecium that to be burst and they release out तो it देखो one paramecium can be produced more than one paramecium okay or you can say amoeba can be produced more than one amoeba okay clear ना स्टूडेंट clear तो मैं पैरामीशियम रो एग्जांपल लिखि दियो पैरामीशियम another one is amoeba both fission करि परबो binary as well as multiple fissions okay right on student हां
सो मल्टीपल और मलेरिया पैरासाइट भी करि परिबो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट आउट एग्जांपल देखो स्टूडेंट देखा जाउछ ना समस्त को मलेरिया पैरासाइट्स कौन स्टूडेंट प्लाज्मोडियम में भी एग्जांपल नहीं जाओ पायमेशियम में भी एग्जांपल नो एमोइबा रे भी गुटे एग्जांपल नियो ठीक अछि सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल फ्यूजन्स ओके तो मल्टीपल फ्यूजन्स तमरो सरला नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशंस इफ एनी डाउट देन प्लीज टेल मी मतलब मु तुमको नेक्स्ट एस्चान रे भी किछ जदी एक्स्ट्रा अछि मु तुमको बुझे देबी ओके नेक्स्ट हेडिंग द स्टूडेंट फ्रैगमेंटेशन last topic of today okay today's last topic hochi fragmentation fragmentation माने कोन स्टूडेंट्स फ्रैगमेंटेशन माने बुझी पड़छो फ्रैगमेंटेशन माने कोन ब्रेक डाउन होगा दैट इज फ्रैगमेंट जो हम कहछे ठीक अछि तो एथिरे गोटे एग्जांपल नबा में स्पाइरोगैरा आ गोटे सी एनिमल दीटा एग्जांपल नबा गोटे प्लांट रो गोटे एग्जांपल नबा आ गोटे एनिमल रो गोटे एग्जांपल नबा सर जोड़ा स्पाइरोगैरा okay स्पाइरोगैरा then another one is sea anemone तो स्पाइरोगैरा का जनरली तमरो एवढे स्ट्रक्चर्स थाए स्टूडेंट्स एवढे स्ट्रक्चर्स थाए these are the spirogyra and they are found in plant okay they are found in water but they are plant actually एगुडा सब microorganisms plant or microorganisms okay plant and found in water. This is an example of plant. Okay, Spirogyra. Sea anemone रो तमे डिस्कवरी चैनल रे देखि थिबो बहुत सारा वायलेट कलर रो सी एनिमल देखा जाए ऑर्गेनिजम्स ओके अदरवाइज तुम नेट रे सर्च करो मतलब मु परे फोटो सेंड कर देबी ठीक अछि तो एटा एनिमल रो एग्जांपल that also found in water ये भी वाटर रे ही देखा जाए ओके स्टूडेंट सो फ्रैगमेंटेशन रो हम किछ गोटे डेफिनेशन लिखि दबा यूज्ड बाय सिंपल मल्टी cellular organisms like spirogyra and sea anemone तो spirogyra रो हमर microorganism yes microorganisms but they are simple multicellular organisms they are not unicellular organisms they are multicellular organisms but simple just like that sea anemone भी गोटे simple multicellular organism माने some of cells can be formed this type of organisms okay एमानो भितर only one cells न थाए किछिटा more than one cells थाए but not excess cells okay some of cells form this type of multiple organisms okay तो तमे स्पाइरोगाइरा रो फ्रैगमेंटेशन में पढिबा पे डिटेल्स एंड सी एनिमल रो तमे एग्जांपल्स लिखि परिबो एति के डायग्राम्स बनै लेखो देन स्पाइरोगाइरा में ठीक पढिबो इरेज कर स्टूडेंट एटा इरेज करछु तो स्पाइरोगाइरा रे कोन होय नै जानो मोबाइल suppose it is one complete spirogyra ठीक अछि one complete spirogyra तो fragmentation means कोन suppose it divide हैला कोन हम पढ़ले amoeba divided into two parts and it forms two daughter amoeba okay just like that spirogyra also divided into two parts okay dita parts से convert हैला student dita part हैला तो तमे का मैंने इक्वली डिवाइड हैला ना ये तो राइट साइड डिवाइड है ये तो लेफ्ट साइड आसीला ओके एटा बाइनरी
बाइनरी फ्यूजन रे कोन होतिला ना एमोएबा होची गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रैगमेंटेशन इक्वली लागियो स्टूडेंट बट दे आर एक्चुअली नॉट इक्वल ओके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओके तो इट इज स्पाइरोगेरा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ये कंप्लीट है अगर कंप्लीट ग्रोथ है अपन कहबा स्पाइरोगेरा तो वंस इट डिवाइड होला परे यार जो मिसिंग पार्ट्स अछि से ऑटोमेटिक कोन ग्रोथ करिया पई भी ताको टाइम लागे ठीक अछि देन वी कैन से इट इज अ कंप्लीट स्पाइरोगेरा इट आल्सो ग्रो एंड फॉर्म ए कंप्लीट स्पाइरोगेरा तो डिफरेंस कोन है यूनिसेलुलर बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रैगमेंटेशन भितरे ना बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म्स ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट फ्रैगमेंटेशंस के परफॉर्म करे ना सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स फ्रैगमेंटेशंस अदरवाइज आपको तो मैंने कि बाइनरी फ्यूजन रे पढ़ी था बुझी गलो ना स्पाइरोगेरा को हमें फ्रैगमेंटेशन रे कोम पढ़िले काहे ताको बाइनरी फ्यूजन रे पढ़लेनी तो बाइनरी फ्यूजन ओनली इन पॉसिबल in unicellular organisms but fragmentation may be same case it also grow and form a complete spirogera but it is for simple multicellular organisms in fragmentation difference होची एटा okay binary और fragmentation भीतर binary unicellular it was a simple multicellular organisms आज रो क्लासेस एतिकी ही था स्टूडेंट्स तुम नोट्स बनाओ एंड मु एस चंद्र काली मु तुमको नोट्स देबी कि मु निजे नोट्स बने के पठाई देबे ठीक है थैंक यू सो मच बाय इफ एनी डाउट देन प्लीज टेल मी बाय बेटा बाय लव यू ऑल बाय बेटा समस्त पढ़ भल से घरे ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम समस्त घरे पढ़ भल से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बाय चलो रही बाय बेटा नमस्कार समस्त को थैंक यू चलो बाय समस्त घर बस पढ़ नमस्कार समस्त को चलो रही बाय मैडम पढ़े देले